हाय, वेलकम टू स्टेटलीनेस अस्मिता। ये लेमन ग्रास का पौधा है। दिखने में घास जैसा होता है और उसकी महक नींबू जैसी होती है। लेमन ग्रास को आयुर्वेदा, मेडिसिन, चाय, तेल और कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले साइड से मिट्टी डिग करें। अगर डिग करते समय इसकी थोड़ी रूट्स टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अब वाज के साइडवेज से मिट्टी डिग करें। मैंने इसे 3 महीने पहले ही रिपोर्ट किया था। 3 महीने में ही इसके रूट्स बाहर आए। जब आपके गमले के ऊपर या नीचे ड्रेनेज होल से रूट्स निकले तो पौधे को रिपोर्ट करें। वाज के साइड और बॉटम को टैप करें जिससे कि मिट्टी लूज हो और पौधा आसानी से निकल जाए। ये पूरा रूट बाउंड हो गया है। इसके साइड्स ऊपर और नीचे के थोड़े रूट्स निकालती हूँ। ध्यान रखें, आप ऐसे रूट्स बाकी प्लांट्स के ना निकालें, इससे पौधा खराब हो सकता है। बकेट में पानी लिया है। इसमें 30 मिनट या 1 घंटे के लिए रखना है जिससे मिट्टी लूज होगी। रूट लेवल तक पानी डालें। पॉटिंग मिक्स के लिए लिया है 8 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर खाद, 1 भाग केचुआ खाद, आधा भाग कोकोपीट और 1 छोटा चम्मच एप्सम सॉल्ट। इसे मिक्स करें। रिपोर्टिंग के लिए लिया है 10 इंच का वार। मिट्टी डालने से पहले ड्रेनेज होल चेक करें ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए। इसमें मिट्टी लूजन हो चुकी है। अब रूट्स ट्रिम करें। Echoing around these walls.
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मैं लिव स्ट्रीम नहीं करूँगी, आप चाहे तो इसकी लिव स्ट्रीम करके इस्तेमाल कर सकती हैं। रिपोर्ट करने से पहले ड्राइड लीव्स निकालें। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow. मिट्टी डालते वक्त ध्यान रखें पौधा स्ट्रेट हो। मिट्टी को ऊपर से हल्के से दबाएं। अब अच्छे से पानी दें ताकि सारे रूट्स को पानी मिले और एक्सेस पानी बाहर आए। अब पौधे को 6 या 7 दिन छांव में रखें और उसके बाद धूप में रखें।